Got it. Yes, Vanshika ji, we are live. You can proceed with the class. Okay, sir. Thank you, sir. A very warm afternoon to sir and to my fellow mates. My name is Vanshika, and I welcome you all on the behalf of Dear Delhi team in a today's science and tech session by our most esteemed and experienced faculty, Mr. Niketan, Mr. Neeraj, sir. Sir is an eminent personality who holds variety of experience in many fields. Sir is a practicing advocate in Supreme Court and High Court and holds a membership in Bar Council of India. He also a trained biotechnologist and alumni of many esteemed institutions like IIT Bombay, University of Mumbai, and NLU Bengaluru. He also he has also done a certificate course in I in IPR from United Nations Intellectual and Property Right Organization and holds LLM degree in environmental law, energy and chemical change. Sir has been the part of many esteemed IS institutions like Vajiraman Ravi, Vision IS, Byju's and many more. Sir is also the author of books on science and tech and environment. We extend our gratitude to Sir and welcome him with our whole heart. So let us begin our today's class with a positive quote that says, "There is no use of doing a kindness if you do it a day too late. Similarly, there is no use of our effort if we are not doing them at the right time." But one may ask, what is this right time? So, my dear friends, all we have is now. We must stop procrastinate and start doing what must be done. With this, I'd request Sir to please begin the session. Thank you. Thank you, everyone. First of all, very good afternoon, everyone. Those who have joined right now और सभी को नमस्कार मैं करता हूँ. सबसे पहला तो ये है कि I will extend my warm greetings to सोनू सूद फाउंडेशन, संभवम IAS, दिया फाउंडेशन. और इसमें मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूँगा. पहला है अनिल जी हैं, अनिल सर है जिन्होंने ये सारी चीज़ों को देखा है. अखिलेश is another pillar for that. I'm very glad to see all of you right now, right? अभी मैं दिल्ली में नहीं हूँ क्योंकि मेरा अभी कंटिन्यूस क्लासेस कई जगह बाहर चल रहा है और मार्च का महीना होता है कि टिल एवरीबडी रिक्वायर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, दिस सब्जेक्ट विच आई टीच. तो राइट नाउ आई एम इन जयपुर. मैं भी जयपुर में हूँ. तो जस्ट टू बिगिन विद द टॉपिक, थोड़ा मैं करेक्शन करता हूँ. एक पहला करेक्शन ये है कि दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR, राइट. आई स्पेशलाइज इन द फील्ड ऑफ IPR लॉ, राइट. और दूसरा है इट इज इन्वायरमेंटल लॉ, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज. My master's degree into that, LLM, that is where I specialize in my master's degree, and that what just some error was it. I just improved on that. I believe that a person's kind of thing depends on the work, not the degrees or qualification. Right? One may be holding a lot of qualification, that doesn't matter there. I always, like in my classroom, I never talk about my qualification, but I extend my thanks to a person who has introduced me. I think that for a teacher, for an educator, what is very important is the teaching part of it, right? Degree doesn't matter there. So with that note, I will start my classes because I believe in more teaching content and that part rather than any other things. इसमें कई बच्चे भी होंगे जो हिंदी माध्यम के होंगे, जो नॉर्थ से जुड़े होंगे. मैं उनको भी ये आश्वासन देता हूँ कि कई चीज़ें मैं हिंदी में ही बता दूंगा, सो दैट दे डोंट वरी अबाउट, उनको चिंता ना हो कि उनको कोई टर्म नहीं पता है या वो समझ नहीं पा रहे हैं. एट द सेम टाइम देर आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया coming from different parts of the country. So I will use the language so that everybody is able to understand and go through everything into that. Now, first of all, we are having science and technology session here. And the very important thing is the coming prelims exam. आने वाला जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए हम लोग ये सेशन कर रहे हैं. और 2 बजे मैं मिलूंगा, 2 o'clock. जैसे आज 2 PM हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, तो फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड आई विल बी having classes regularly till right Saturday, but Sunday is already off. So 2 to 4 PM we'll be meeting there.
और मेरा यहाँ सबसे पहला टारगेट है कि दोज ऑफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन कमिंग प्रीलिम्स एग्जाम, राइट, दे शुड नो द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आई एम स्टार्टिंग विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शुरुआत कर रहा हूँ, और जो लोग इस बार पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट एट द सेम टाइम दोज आर गोइंग टू अपीयर द नेक्स्ट ईयर 2025 एग्जाम, टॉपिक्स आर अगेन इंपॉर्टेंट। मैं ये मानता हूँ कोई भी चीज आप जो पढ़ते हैं वो हमेशा के लिए होता है, एंड इज नॉट दैट यूपीएससी एग्जाम ओनली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम वन ईयर। अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, डायनामिक्स चेंज हो रहा है। ये नहीं समझ के रखना है कि केवल एक साल का आपने करंट एस्पेक्ट पढ़ लिया तो आपका एकदम शॉर्ट शॉर्ट वही क्वेश्चन आना ही है। एंड यू नो दैट ये जो दिया फाउंडेशन के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। तो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड फ्यू थिंग्स, देन आई स्टार्ट विद द टॉपिक। ये एक बाजार है ना, यूपीएससी कोचिंग इज अ बाजार, and the kind of thing which has come up in the last 4 5 years, right? I'm totally not happy with the situation happening in the coaching industry there. ठीक है, यहाँ पे लोग क्या है, it has all become like a commercial thing kind of, ठीक है। बहुत लोग क्या है, हवाबाजी कर करके अपने मिलियंस फॉलोवर्स कर लिए हैं, उनको पढ़ाना लिखाना आता नहीं है, केवल वो मीडिया मैनिपुलेशन करते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं। एंड द पुअर पार्ट ऑफ इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट मेनी स्टूडेंट्स अंधभक्त होके उनको फॉलो करते हैं। And at the end of the day, what is happening there? They're not able to solve the questions in the exam, and they're not able to qualify the first stage preliminary exams. तो दिया फाउंडेशन का यहाँ पर ये चीज है कि ये सिंसियर एफर्ट है, यहाँ पर कोई कॉमर्शियल एंगल नहीं है, पैसे कमाने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, you are guided in the right path. That's very important thing, right? It's not any other part. So the objective, the motto, and the mission is very simple, that people who have joined this Sambhavam IS, they get the best kind of input from all faculties, और उनको जो एग्जाम का जो पार्ट है, जो यूपीएससी चाह रही है, जो यूपीएससी का ओरिएंटेशन है, वहां तक पहुंचा जाए एंड डिलीवर द रिजल्ट, है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पर जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा तो दैट विल बी एग्जाम ओरिएंटेड काइंड ऑफ थिंग, और वहां पे आपको मेहनत भी करना होगा, घर जाके किताबें खोलनी होंगी, पढ़ाई करना होगा, सो दैट यू आर एबल टू गो विद द क्लासरूम, राइट। So there's one thing which I just wanted to just introduce something on that, so that you know the way, how we are going to proceed with the topic there. मैं ऑफलाइन भी मिलूंगा आप लोगों से, तो डोंट वरी, क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूं, मैं आई एम कंट्री आउटसाइड। तो विल मीट देयर, विल हैव अ फिजिकल मीटिंग आल्सो देयर। वो भी हम लोग समय मिलने पे मिलेंगे, और काफी सारे जो भी आपके इंटरेक्शंस हैं वो मैं करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, एंड आई बिलीव जितने लोग हैं यहाँ पर, है ना, दे नो द सिलेबस। मैंने एक सेशन लिया था, है ना, कुछ महीने पहले मैंने सेशन लिया था जहाँ पे मैंने बताया भी था कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। उस समय आप लोगों में से कई बच्चे ज्वाइन भी थे उस टाइम पे, और ये सेम वीडियो यूट्यूब में भी है। तो मैं ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करूंगा, अगेन टू गो बैक टू द सिलेबस और सारे क्या करना है नहीं करना है, that I will be doing with the topic. You will be getting to know that. So what we are going to do here from prelims point of view, I'm going to start with the space and astronomy topic. Our first topic will be space science and technology and astronomy part of it. So that's what we are going to cover in today's class there. So let me share the screen here. You all will be able to see the screen now, right? So I'm going to cover here space and astronomy topic. And you know that in every year in prelims exam, question comes from space and astronomy topic. अंतरिक्ष विज्ञान से हर साल एक ना एक प्रश्न होता है, और ये हमेशा चर्चा में होता है। द हिंदू पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, whatever you take that, you'll always come across certain type of topics which are always in the news with respect to space science and technology, right? So that is where the UPSC get into that and ask question. Even the main examination, GS3 paper, right? Last year, 2023 mains paper, there was a question on Chandrayaan 3 mission, right? There was a direct question on that. सीधे तौर से Chandrayaan 3 पे क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट, अगर देखा जाए तो पहला पार्ट आता है, ये चीज है आर्टेमिस,
Artemis mission there, right? इस साल के एग्जाम के लिए कमिंग एग्जाम is a very important topic there. Artemis mission there. Humanity is returned to the moon. Lunar mission has become very very important, right? अब मैं बहुत सारी चीजों को बताऊंगा, मैं एक एक करके मैं सारी चीजें कवर करूंगा. Lunar mission has become very important. Chandrayaan 3 mission which India carried out, and now we are going for Chandrayaan 4 mission. हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे. मैं लॉन्च व्हीकल, GSLV Mark 3 है ना, वो सारी चीजें बताऊंगा. भारत का इसरो का चंद्रयान 3 मिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग तैयारी अब करें चंद्रयान 4 मिशन के बारे में. वो मैं सारी चीजों पे आऊंगा मैं. I'll go one by one, but I've just started a topic Artemis. I don't know how many of you know about Artemis mission, right? ये कहीं ना कहीं न्यूज में होता है, और जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है तो यूपीएससी क्वेश्चन, नाउ द डायनेमिक्स ऑफ द क्वेश्चन हैव चेंज्ड. अब वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जहां पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फैक्ट्स पता होना चाहिए. कई बार फैक्ट्स होते हैं वो भी मालूम होना चाहिए. वही बच्चे जिन्होंने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इन एंड आउट एवरी अंडरस्टैंडिंग है, वो क्वेश्चन कर सकता है. और मुझे बताने की जरूरत नहीं है. यू ऑल नो दैट एलिमिनेशन हैज बीन रिमूव्ड, कि 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3. अब ऐसा है नहीं. या तो आपको पूरी तरह से स्टेटमेंट पता है, या आपको नहीं पता है. आप वहां गेस वर्क नहीं कर सकते, राइट? तो वहां चीजें. तो आई जस्ट दोज हु वांट टू आंसर मी, देन आई गो टू द टॉपिक हियर. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस नेम आर्टेमिस? कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है? कोई, हाँ, आप हैंड रेज कर सकते हो. देन आई आस्क यू वन बाय वन. एनीबडी who wants to just share your thoughts on this particular mission there, Artemis mission? Anybody in the classroom? Because my class will be interactive class. It will not be, one way around. I will be interacting with all of you. We will go to the concept also there. Remember that. मैं concept भी cover करूंगा, तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ना. मैं हर तरह से आपके साथ में हूँ, और ये नहीं समझना है कि फिजिकल क्लास नहीं हो रही है. मेरी क्लास ऑनलाइन भी फिजिकल जैसी ही होती है. देयर इज नो डिफरेंस. तो एनीबडी इन द क्लासरूम देयर हु वांट टू गिव अ थॉट ऑफ इट? Okay, let me see. Anybody is there? I cannot see any. You can raise your hands there. I know many of you will be searching Google search. अभी आप Google search कर रहे होंगे, right? You may be doing the Google search there. But anyway, let me. Nobody has raised hand. Let me just go into the topic here. Artemis is a NASA mission. Is a NASA's mission, right? American Space Agency, NASA's mission to get back to the moon. And it's a very, very important one. Let me write few things about this. It's a NASA mission there. Apollo mission, long way back, 1960s, right? American Space Agency, NASA carried out Apollo mission, where Neil Armstrong, Edwin Aldrin, 2 humans landed on the moon surface. Now, NASA is going to again return back to the moon with the human landing on the moon. Again, the things are getting very fast forward in terms of lunar provision there. So Artemis, this mission which has started there, to humanity is returned to the moon, where man will again return back to the surface of the moon. Manned mission that is, but इसको सीरीज में किया जा रहा है, एक बार में नहीं है. पहले ऑर्बिटर मिशन, जहां ऑर्बिट करना है, फिर आपको पता है लैंडिंग कर ली, फिर वहां पर ऐसा रोवर. तो ये सीक्वेंस में किया जा रहा है. एंड द प्लान इज दैट next year 2025 will be the year when the man, right, human astronaut, will be sent to the moon. अभी वो प्लान चल रहा है, तो उसके लिए तैयारी चल रही है वहां पर. तो just to have some visual aspect again, so if you look at here, this all Apollo 11 mission is the most important mission, which you know that, where 1969, July 1969, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, they landed on moon surface. उस जगह का नाम है मेयर ट्रैंक्विलिटेटिस. That is the name of the place where they landed there. Now, if you see here, that is what I want to say here. So many Apollo missions have been there. These all are the landing sites where the moon landing of man was done. And you know that the person there, Neil Armstrong, the first man to touch, right, the moon surface. And you know his statement: a small step of man, giant leap for mankind.
1969, and today we are in 2024. Right, a lot of things have happened in the field of space science and technology. Right, you all are aware of that. बहुत सारे ऐसे मिशन हुए हैं मून को लेकर, और हम लोग कवर भी करेंगे, तो ये चीज है। तो लूनर मिशन में आर्टेमिस मिशन, इसका दो फेज है। पहला फेज है जो हम लोगों ने किया, जहां पर ऑर्बिटर लैंडर रोवर, जैसे हमने चंद्रयान में किया। और सेकेंड जो इसका है, मैन गोइंग टू द मून, दैट इज व्हाट द प्लान इज देयर। So that's what comes into this. Now, you know this one, Russia, Roscosmos, right? It was also in the news because Russia and that time USSR and USA, they were competing in the Cold War age, when the era of Cold War was going on. And recently, Luna was also going to touch down to the moon, their rover, when our Chandrayaan 3 was trying to land on the south pole of the moon. But what happened at that time? Luna mission failed. Right, Luna mission failed, but we were successful in landing our Vikram with the Pragya rover on the dark side of the moon. So what you see, continuous, what you see in the photograph, a lot of missions have been planned. Even the coming years, Russia, Roscosmos, they'll also have a landing a rover program that they are planning for that. Just some figure I'm talking about. I'll come to the writing part also, just to make you some introduction part of it. Now, our neighbor, China lunar mission. Now, China, if you look at Chandrayaan 3 mission, Chandrayaan 2 mission, China has taken already a lead into that. They have something called Chang'e mission, and they have successfully landed the U2 rover, right? And now what they are planning for return journey. अभी आजकल काफी न्यूज में हो रहा है कि जहां पर प्लैनेट या मून या कोई भी जगह पे टच डाउन करके वहां का सैंपल लेके वापस आने के लिए, तो चैंगी मिशन का अभी ये प्रोग्राम है। ये दिस इज वेयर चाइना इज प्लानिंग हियर दैट in coming years, China is planning for collecting lunar sample and carry that sample back to the Earth. और फ्यूचर में China is going to build research station on the moon. The possibility of building lunar research station, a base on the moon. This is what China has planned for Chang'e mission. So Chang'e mission is another very landmark mission where China is continuously working with that. Right? As we are doing our Chandrayaan mission, China is also going ahead with the mission part of it. तो ये एक important fact है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ ये what you see here, this is a Chinese rover. You all know that India's rover was Pragya, but this is what you see. This is U2. YUTU. The U2 rover of the mission of China, the Chang'e mission 5, right? The name is given U2. This is already successfully they have landed on the moon. They have done a lot of studies on the moon, right? हमारे केस में क्या हुआ, चंद्रयान 3 में हमने लैंडिंग किया. We had a rover, but the problem was that our rover was not do a lot of work. Pragya was just for few days. I'll say that hardly 3-4 days it lasted, and then when we switched off the battery, then it just went into hibernation mode. But China has been carrying out continuous study with the U2 rover. कई बार जो फैक्ट्स होते हैं, जो मैंने बताया कि यू हैव टू बी आल्सो प्रिपेयर्ड विद सर्टेन फैक्ट्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये आपको ये समझना है, यूपीएससी इज वेरी स्मार्ट. Chandrayaan 3 and all these are in the news, and you know, current affairs materials, whatever you study from market, right? You just find Chandrayaan, that mission is going on. And you know, UPSC knows everything. UPSC has that kind of input. What if coming exam, prelims, UPSC doesn't ask about Chandrayaan, but ask something other global missions, right? Or Chandrayaan in the context of global mission. You get one question in the examination, lunar mission. That's what I'm saying, the market and the kind of material what I see, I don't trust any kind of current affair materials that's there in the market. So that's what I'm trying to make you understand, that you have to know Chandrayaan 3 mission. We will be studying that. But along with that, what is very important, you should also know the global missions which is there in the news. क्या क्या ग्लोबल मिशन चल रहा है, आपको उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए. हो सकता है कि कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वो कोई और मिशन के बारे में पूछे, ठीक है, जैसे मैंने आर्टेमिस बताया, देन दिस मिशन आई हैव टॉक्ड अबाउट चाइना का जो है. जस्ट कमिंग ऑन दिस वन,
what you see here, I just wanted to add here, then I'll give you certain points here. This is what you find, that is a ice space. Japan. Recently Japan has carried out a very important mission called SLIM, SLIM, SLIM mission of JAXA. जापान का एजेंसी का नाम क्या है? JAXA. अब ये न्यूज में था स्लिम को. अब जापान इज अनदर कंट्री टू लैंड ऑन द मून. अगर मून की बात करें, लैंडिंग की बात करें, राइट, द जापान हैज आल्सो, जापान ट्राइड विद आई स्पेस. इसका एक मिशन का नाम था हाकुटो, हाकुटो आर, right? That was where Japan was trying, but Japan was not able to successfully land. But now Slim mission has taken a lead and it has landed there. Another country, if you look at, right, Israel. Another country which becomes Israel, right? Just like Chandrayaan mission, what India carried out this Chandrayaan mission, Israel's this one, Bereshit, right? This mission, Israel tried to do that, but this is an orbiter mission, right? They tried with the landing, but this is a main of the, it has done successful orbiter mission, but not the landing, mission. Orbiter mission has been successful, but not the landing mission there. But yes, Israel is also planning to land on the moon with a rover. That's where is doing that. So last year, this year, last year, 4th April, right, Israel was able to enter the orbit of the moon. That was also in the news. तो मेरा ये कहना है कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में केवल चंद्रयान नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो करंट अफेयर्स के मटेरियल्स है पूरा चंद्रयान पे ही दिया हुआ है. आपके दिमाग में बाकी मिशंस भी पता होना चाहिए कि विच ऑल थिंग्स आर देयर, कि जहां से अगर कुछ अगर पैरेलली क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, यू आर प्रिपेयर्ड विद दैट वन. तो दैट इज वेयर द दिस इजराइल्स मिशन हैज बीन देयर, राइट. सो व्हाट आई डू हियर, let us now go into certain things which I explained here. Let me come to the writing part of it. Now I'll try to give you the part of it, right? ये मैंने introduce किया. I just introduced you to the kind of what is going around in the lunar mission there. But let us go into this one. Now, one by one, we will see into every aspect on this. So first of all, let's when you come to space science and technology, and this you can write also there, so that whatever I'm trying to cover, you are able to get to the part, and then later on you can explore all those kind of area there. So certain things, let me just first very briefly cover into that. पहला चीज ये होता है कि जब हम स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो मेनी टाइम वी कम अक्रॉस द टर्म कॉल्ड आउटर स्पेस, जिसको कहते हैं बाह्य अंतरिक्ष. Right, we have been also going straight fast with the lot of space program there. So Bahai Antriksh, right? I'll try to write in such a way that it doesn't go out of the context and you're able to see there. तो जैसे outer space है, तो outer space की जब हम बात करते हैं, ना Earth, Moon, other heavenly bodies, celestial bodies, right? When we talk about that, you know that Earth's atmosphere, right? As we go up in the atmosphere, है ना, भारत जो जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में जब हम एटमॉस्फेयर में हम जाते हैं तो we see that there are a lot of layers are there, troposphere, stratosphere, it goes into that. You're aware of ionosphere, exosphere, that part comes here, right? So it is something here. When we talk about outer space, one very important area comes here, which is located 100 kilometers from the surface of the Earth. This is called Karman line. Karman line, right? What is Karman line here? See, when you talk about this Karman line, right? Karman line here, basically Karman line जो है, ये रेखा जो है, according to, it is basically according to kind of conventions like international, when say international kind of norms, जो standards होते हैं, ठीक है? It is considered to be a Karman line here. ये जो Karman line है, is an imaginary line. Karman line is considered, इसको consider किया है, considered to be the beginning of the outer space. तो पहला चीज ये ध्यान में रखना है
कि when you talk about space and beginning of space, so that is not something 400 kilometers or 500 kilometers or thousands of kilometers, lakhs of kilometers. We for international norms, whether it's a American Space Agency NASA or Indian Space Agency ISRO or Japan JAXA or Russia's Roscosmos, any agency or China's Chang'e, anyone, we consider anything above carbon line as a beginning of the outer space. मतलब ये एक काल्पनिक रेखा माना जाता है, और जितने भी अंतरिक्ष के मिशन होते हैं तो इसके अब जो भी है वो आउटर स्पेस आता है, वहां पे इसको सारे हम स्पेस को करते हैं, ठीक है, वहां पे हम वी वर्क इट आउट। तो एक चीज क्या है यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इन केस अगर क्वेश्चन में कहीं भी दिस वर्ड कम्स कार्बन, तो यू आर अवेयर व्हाट इज कार्बन लाइन, ये आपको पता होना चाहिए। You must be aware of this carbon line. That's what is given here. That is what is considered. Above that is all outer space. Now, what is very important, I'll just slightly go up here. Second thing, what comes here, that's what few terminology I'm introducing. Then I'll come to all the lunar mission, everything there. Second thing is that when you talk about space program, so there is concept of orbit. Right. Orbit is there, which we call in हिंदी में कक्षा कहा जाता है, या कई बार अंग्रेजी शब्द ऑर्बिट को इस तरह से लिख दिया जाता है, ऑर्बिट होगा, है ना। तो ऑर्बिट कक्षा जो है, और यू ऑल नो दैट इज बेसिकली अ पाथ, राइट, path of movement of either celestial bodies like sun, earth, moon, asteroid, meteoroids, or artificial man-made spacecraft, जो भी man-made spacecraft होता है, राइट, man-made spacecraft जो भी हम बनाते हैं, जैसे कि सैटेलाइट और एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पेस प्रोब जो कि उसे मूव करता है। एंड यू ऑल नो दैट दिस पर्टिकुलर वन ऑर्बिट जो है, तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, gravity at work here, gravitational attraction of celestial bodies. Sun attract Earth. You all have studied in geography, all of this one. Or at this same time, here when we talk about Earth, we talk about spacecraft, satellite and spacecraft, right? ये सारा वहां पर होता है, वहां पर, है ना। तो यहाँ पर जब कोई ऑर्बिट में, whenever any object moves in an orbit, any spacecraft moves in an orbit, what is very important here, it has to remain in the orbit. तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है which I would like to just add one by one. The concept comes here, that is a orbital velocity. Any object which is in the orbit, like Earth going around the sun, or let's say moon going around the Earth, or any satellite going around the Earth, any kind of heavenly bodies, you take this concept of orbital velocity. Now, what is orbital velocity? It's the speed here, right? By which the object goes around that. तो यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आता है. One is this one, where there's any body, if you consider to move in a rotational frame or let's say a circular path, तो we come across a force called centripetal force, जो कि सेंटर में होता है. कोई भी ऐसा है जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, तो we consider that it is there is a force which act towards the center, and this is balanced by a pseudo force called centrifugal force, which is outside. ये बाहर की ओर होता है. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आप मानते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इक्वल एंड ऑपोजिट, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो अगर हम यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? टुवर्ड्स द सेंटर, द फोर्स व्हिच एक्ट टुवर्ड्स सेंटर, right? Now if we consider, let's say we consider this object is Earth, right, and the satellite or anything which is going around the Earth, then what will happen here? That will be gravitational pull of the Earth, right? Gravitational pull of the Earth will be there, but the gravity by which
Earth attract that object. Now, if you take sun and the Earth, sun and the planet, again that gravitational pull of the sun will work into that. और यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं ग्रेविटी की बात करते हैं, इज नॉट ओनली वन बॉडी, बोथ द बॉडीज हैव गॉट द फोर्सेस. अब मुझे पता है कि आप लोगों ने, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ गिवन बाय आइजैक न्यूटन, कि टू ऑब्जेक्ट्स ना दे अट्रैक्ट ईच अदर, and that is the force of gravity of one object on the other is given as a product of masses and inversely proportional to square of distance separating those two bodies. तो दोनों बॉडीज का वहां होता है. तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब इसको मूव करते हैं, जब ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पर जो फोर्स होता है ये यहाँ पर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड व्हाट इज गिविंग सेंट्रीपिटल फोर्स? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. है ना, मैं हिंदी में समझाता हूँ कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि सूडो फोर्स है, रियल फोर्स नहीं है, जो बाहर की ओर एक्ट कर रहा है, वो किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स को कर रहा है. और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण हो रहा है? अर्थ की ग्रेविटी के कारण हो रहा है. दैट अर्थ ग्रेविटी इज गिविंग दैट. तो व्हेन वी वर्क आउट द इक्वेशन एवरीथिंग, मैं डिराइव नहीं करूंगा, जब आप इसको वर्कआउट करते हैं, अगेन रिमेंबर दैट फॉर यूपीएससी एग्जाम formula is not very important. Formula is not very important. R is the distance. है ना, formula is not very important. Derivation is not very important. मैं derive कर सकता हूँ, लेकिन मैंने derive नहीं किया है, because that is not the part of the discussion, because UPSC is not going to the formula and everything. But yes, what is very important here, ये जो concept मैंने बताया कि जब आप derive करते हो कि जब centripetal force equal to gravity जो होता है mv square upon r equal to gmm divided by r square, so you will come across this. G is universal gravitational constant, m is the mass of the object, r is the distance. ठीक है. Now suppose let me see here, जो मैंने यहाँ लिखा है. अब आजकल यूपीएससी में क्या हो रहा है, प्रीलिम्स में आजकल क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, रीजन असेसन. सपोज दैट, लेट मी सी हियर हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, कितने लोग कॉन्फिडेंट है. यहाँ बहुत लोग होंगे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे, तो नो नीड टू वरी. आपको चिंता नहीं करना है. Those are non-science background, you don't have to worry. Suppose that I am asking a question here. Let me write a question here. Let me see how many of you know about this concept. Let me give you a question here. ठीक है. Consider the two statements. ठीक है. Last year यूपीएससी ने ये पैटर्न स्टार्ट किया, दो स्टेटमेंट, रीजन assertion टाइप. Statement one, right? Let's say statement one is this, that a spacecraft moving in an orbit is attracted by Earth towards center of the Earth. ठीक है. And the another statement I am giving here, statement 2, orbital velocity of the spacecraft is independent of its distance of orbit from Earth. Let's suppose we consider to be a circular orbit, but actually, you know, the orbit can be elliptical also, but just for time being, just consider that. Let's say suppose this is the statement here, and now I'm giving the options here. Both, I'm writing short form here, statement 1 and statement 2 are correct. You know that. इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आप टेस्ट पेपर में भी जो होता है, जब आप सॉल्व करते हैं, यू गेट दैट वन देयर.
of statement 1, just in a short form I'm doing. Now B, you know that B में क्या होता है कि both statement 1 and 2 are correct, ठीक है, and statement 2 is not the correct explanation, is not the correct explanation of statement 1. C, right, C यहाँ पर है, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Or D is that statement 1 is correct. Let's say suppose you get this kind of a choice here and statement 2 is incorrect. ऐसे क्वेश्चन आते हैं टेस्ट पेपर में, टेस्ट सीरीज में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली क्लास है, इस बार के कमिंग पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाएगा। This type of questions this year exam, they're going to increase because such kind of questions are not very easy to solve. Such kind of questions are really, I'll tell you that if you're thorough with it, whether history, geography, polity, economy, environment, science, take any subject, if you're really thorough about it, then only you will be able to get the correct answer. And UPSC has got a strong weapon in the hand. Those who have really done the deep study, they know about the part, they will be able to solve it, है ना, वो लोग कर पाएंगे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन का सॉल्व जो है। सपोज करो कि ये जनरल साइंस है, ये साइंस की बात हो रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारे साइंस में होता है, फिजिक्स में पढ़ना होता है, फिजिक्स में आप ये सब पढ़ते हैं। तो वो मान लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, सपोज वन क्वेश्चन यू गेट इन द एग्जामिनेशन, तो एनीबडी इन द क्लासरूम, क्या इसका आंसर होना चाहिए? मैं बताया, यूपीएससी विल नॉट आस्क यू डेरिवेशन, यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी फार्मूला, एनी काइंड ऑफ थिंग देयर, बट लेट्स से द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस वे, तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? लेट मी आस्क वन बाय वन। भानु नायक, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Are you able to unmute yourself, Bhanu? Yes, sir. Okay, first of all, yes, Bhanu. Good afternoon. How are Good you? afternoon, sir. Good? Good? Good, sir. Good, sir. Good. How I are think you, you were there last time, right? Yes, sir. When I Yes. took the session, that time you were there. Yes, sir. Yes, sir. We That's actually good. at the moment. Correct. Bhanu, what do you think that? What should be the answer? If you Well, suppose first you one- get first one, A. First one, A, not A option. Option D is correct. In first one, it is clearly shown that centripetal force is acting towards the Correct. center of the Correct. Earth. Very true. Good, good, And very second- good. Second, Yes, I second. think it's wrong, sir. Like orbital velocity here is not dependent, but inversely proportional to the distance. Distance. Very true. This is what I've given here, this one. So in this case, mass, when you're talking mass, we're talking mass of the Earth. We're talking mass of the Earth, not the spacecraft. The body which attract, we take that one. So it depends on R, right? R is the factor here, where R comes into that. So you're right there. Because this statement is correct, but this is wrong, right? So you know that the answer will be what? Statement 1 is correct, but the 2 is incorrect. That depends on the distance from the Earth, right? That distance GMR, that depends on that. There is single R will be there. I'll just 1 second. This is a single R here. When you derive here, you get this single R is there. Not R square, single R will be there. Okay, that's what. But now what I'm saying here, if anybody is aware of that, that depends on inversely proportional to R, right? We'll be able to get there. So Bhanu, well done. It's a very simple question. मैंने ऊपर पहले फॉर्मूला लिख दिया है, अगर जिसको पता है वो इजीली कर सकता है, जिनको नहीं मालूम है वो जल्दी उनको स्ट्राइक नहीं करेगा, they will not be able to understand and get that part of it. So very true that D is the answer here. So now what happens here? Suppose if this is the Earth, if we take Earth and we take a, let's say, orbit here, and suppose that you have two different orbits here. One, when we place the satellite here, another we place it here, right? Suppose this distance is R1 and this is the R2, right? And let's say this is moving with a speed
v1, and this is moving with the speed v2. We take here. So if you take here, so what is here? Velocity is inversely proportional to r. Doesn't depend on mass. So if you take here, so since r is longer for where r2, r2 is greater than r1, so what will happen here? v1 will be less than v2. कहने का मतलब क्या है? ऑर्बिटल अगर वेलोसिटी हम ले of second spacecraft is higher, right? That's a more is more than the first. Now suppose the mass here is m1 and this mass is m2. Now tell me, does it depends on mass? Does orbital velocity depends on mass? It doesn't depends on that. Orbital velocity is independent of mass of the satellite or spacecraft. Mass of a spacecraft. It depends on the mass of the Earth. Rather, what it depends on? Rather, depends on mass of the Earth, which is attracting the spacecraft. On mass of the Earth. तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, फ्रॉम द साइंस पॉइंट ऑफ व्यू समझना जरूरी है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होते हैं, है ना, वेलोसिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है. तो ऑर्बिटल स्पीड या मैग्नीट्यूड जो वहां पर है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ. अगर ऑर्बिट दूर होगा स्पीड कम होगा, अगर ऑर्बिट करीब होगा, नजदीक होगा, स्पीड ज्यादा होगा, मोर होगा. और वो मैटर नहीं करता है कि वेदर सैटेलाइट का मास 1 ग्राम है या सैटेलाइट का मास 1000 किलोग्राम है. इट डजंट मैटर. मतलब सैटेलाइट के मास, स्पेसक्राफ्ट का मास या कोई फैक्टर नहीं है. दैट्स नॉट द फैक्टर हियर. व्हाट इज मेन फैक्टर हियर is the mass of the earth which is attracting here. The mass of the satellite or spacecraft is independent here. That doesn't matter. तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही ऑर्बिट में हम 10 ग्राम का सैटेलाइट को डाल दें या 10 किलोग्राम सैटेलाइट प्लेस कर दें और उसी ऑर्बिट में हम 10,000 किलोग्राम भी प्लेस कर दें, दोनों एक ही स्पीड से मूव करेगा. आई रिपीट हियर, if in the same orbit we place a satellite of 10 kilogram and we place a satellite of 10,000 kilogram, both will move with the same velocity. They'll not be the different. मास से कोई मतलब नहीं है सैटेलाइट के. आई एम रिपीटिंग, स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट मास से कोई मतलब नहीं है. Whatever depends on the mass of the object which is attracting. Here earth is attracting. It depends on that, right? तो ये चीज को बैक ऑफ द माइंड में रखना है. You have to be keeping this in the back of the mind, right? You all have studied, because I know that many of you would have done coaching institute or some kind of videos you have gone through. तो आपको ये concept पता होगा. You may be aware of such kind of concept there, right? So I'm just trying to highlight it, because if in case you get any such questions, then you are prepared. Okay, achha, I know that. I am aware of it. I can get the correct answer there, right? So that is what I brought here. Now what I'm coming here. Again, because I'm going to discuss space and astronomy, many important areas I'm going to cover in the classroom. But I want that the people who are right now in the first class, they're aware of terminology. वो सब जितना वर्ड है टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अभी लूनर मिशन या आदित्य L1 गगनयान सब कुछ मैं डिस्कस करूं और इसमें बहुत लोग जिनको पता नहीं ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या होता है ना. तो ये पहला मेरा काम है कि आज पहला सेशन में सारा एक वर्ड्स को एक साथ में कर दो, सो दैट यू आर अवेयर कि अच्छा ये वर्ड का मतलब ये है. देन करंट अफेयर्स बिकम मोर बेटर टू रीड एंड अंडरस्टैंड. ऑल द पॉइंट्स विल कवर दैट. ठीक है. तो यहाँ व्हाट आई हैव सेड हियर, so you have to know what is orbit, you have to know what is orbital velocity, right? अब मैं जो point पे, what I'm now coming here, what I brought here, this concept I brought here, orbit part. Now let me write certain thing here. Third point which I'm now trying to bring here. Let me see here. This names of the orbit. Okay, we will be covering a lot of here. That let's say when you say classification. Of orbits or types of orbits. I'll not go in much detail, but just I want to know
how many people are aware of those kind of terms here? So first is that this one, you are aware of this one, polar orbit, equatorial orbit. ये सबको पता है ना, इक्वेटोरियल ऑर्बिट क्या होता है और पोलर ऑर्बिट क्या होता है। अगर हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो आपको पता है ये वर्ड क्या है ना, सिंपल आपको मालूम है अर्थ। अब अर्थ है, अर्थ का अगर देखा जाए इक्वेटोरियल ये आता है, अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन में आता है ये, ठीक है। पोलर आपको पता है, पोलर इफ यू टेक अर्थ हियर, ये इस तरह का होता है। तो सैटेलाइट यहाँ जो मूव कर रहा है इज मूविंग इनटू दिस काइंड ऑफ ऑर्बिट हियर। और यहाँ क्या होता है, ये पोल टू पोल होता है, नॉट नॉट टू साउथ, पोल टू पोल, दिस वन is right. So one is the equatorial plane. When we imagine that equatorial plane here, Earth, so we see that it is basically going from in equatorial plane, right? Another comes to the polar plane here, right? अब इसमें दो, अब क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन पार्ट बताओ। ये नॉर्मली क्या होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जब हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन around 36,000 kilometers. There we use this kind of orbit, and here what we call earth observation, remote sensing. जो पोलर ऑर्बिट होता है कहीं, उसका यूज कहाँ होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग के लिए हम यूज करते हैं टू कलेक्ट एनी काइंड ऑफ डेटा फ्रॉम द अर्थ। यूज दिस काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट so that we, the satellite which goes around the earth, which move around the earth, is able to map. This is the earth, is able to map. It goes around the part of it. Earth rotates from the axis, but is able to go around the earth so that it is able to cover the most of this part of the earth. Where when you say equatorial, that means you're talking about this one, which we use for relaying signal, sending signal and receiving signal. That equatorial becomes more better orbit here, right? फिर यहाँ पर आपको पता है कि ऑर्बिट जो है आइदर वो क्या होता है, या तो इलिप्टिकल होता है, यू आर अवेयर ऑफ दिस इलिप्टिकल काइंड ऑफ ऑर्बिट देयर, और दूसरा होता है कि सर्कुलर ऑर्बिट होता है। सर्कुलर ऑर्बिट याद रखना है कि दोनों पर्पस के लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए भी होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। अब जैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसका सिंपली ये कि अर्थ है तो वी कैन हैव दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट हियर, राइट। एंड हियर व्हाट वी टॉक अबाउट सर्कुलर, कि एवरीथिंग विल बी द सेम, every distance from earth remains the almost same, right? This is the kind of a circular orbit, almost we keep it at the same distance here, equidistance. यहाँ पे क्या होता है, satellite will be having the near distance, far distance, right? That what comes here, right? ये चीज है। And when you talk about earth के लिए, now I'll introduce a term here, you're aware of this. This is called as a perigee. You are aware of this word. As Earth का sun के साथ क्या होता है, perihelion, and the farthest point you know is called apogee. But we don't see perigee, apogee in circular orbit. Now tell me, अभी मैंने आप लोगों को ऑर्बिटर स्पीड बताया, ये सैटेलाइट का कहाँ स्पीड ज्यादा होगा? अगर हम ऑर्बिटर स्पीड की बात करें पेरीजी और कंपेयर करें एपोजी, तो कहाँ पे स्पीड ज्यादा होना चाहिए सैटेलाइट का? Where it will be moving fast. It all depends on distance, no? So where it will be moving fast. Okay. I'm looking at the chat box also there. Good. R perigee में जो R है वो less है ना? If you talk about R, perigee का जो distance है, the distance part of it is less than the distance of apogee. Apogee is further away. Apogee is the further away distance there. So in this case, what will happen here? Speed will be higher. Speed will be higher in perigee. Here it will move fast. On the other end, it will move slow. Apogee will be moving slowly. Perigee it will move fast. Because R, the distance R, here R perigee is smaller than the R apogee. Perigee की तुलना में apogee का distance कम है, तो जब distance कम होगा, इनवर्सली स्क्वायर होता है, इनवर्स होता है, तो distance कम है तो स्पीड ज्यादा होगा। तो जब सैटेलाइट पेरिजी क्रॉस कर रहा होता है तो बहुत हाई स्पीड में मूव करता है, जब एपोजी होता है वहां स्लो हो जाता है। ऐसा सर्कुलर नहीं होता है। सर्कुलर में
दिस ऑर्बिटल स्पीड जो ऑर्बिटल है इट्स अ कांस्टेंट, इट ऑलवेज बीन कांस्टेंट, ये बदलेगा नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये सब आपको समझना है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें, आई टोल्ड यू दैट मैं बहुत सारी चीजों को कवर करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कवर, तो ये थोड़ा वहां होना चाहिए। उस समय ये नहीं होना चाहिए कि एपोजी क्या है, पेरिजी क्या है, ऑर्बिटल स्पीड क्या है। तो एट द बैक ऑफ द माइंड, सी एट द बैक ऑफ द माइंड यू हैव द familiar with the terms here, and many of you are responding, that's why I'm very very happy. Right, Mogambo khush hua, good. I can see that your motivation, आपका मोटिवेशन देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग जवाब दे रहे हो, यू आर गिविंग मी द रिप्लाईज, दैट सिम्स रियली गुड, है ना। तो वो चीज यहाँ पर है, तो ये ध्यान में रखना है। नॉर्मली थिंग्स आर एलिप्टिकल बट सम केसेस वी हैव अ सर्कुलर। अब ये चीज याद रखना है, कहाँ सर्कुलर होता है, वेर वी हैव अ सर्कुलर पार्ट ऑफ इट, आई जस्ट मेंशन देयर, वन इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वहां हम मेंटेन करते हैं सर्कुलर पाथ। कई बार हम इसके लिए भी करते हैं, रिमोट सेंसिंग पोलर अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन केवल वहां पर जब हम नॉर्थ टू साउथ करते हैं तो वहां भी हम रखते हैं। और इलेक्ट्रिकल जो होता है नॉर्मली नेविगेशन के लिए होता है। अब जब जीपीएस सैटेलाइट होता है तो वहां नेविगेशन जो होते हैं, जैसे खासतौर पे जीपीएस सैटेलाइट जो होता है वहां पर इलेक्ट्रिकल होते हैं, यू विल कम अक्रॉस इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ इट, है ना। बट अर्थ ऑब्जर्वेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट वी ट्राई टू मेंटेन सर्कुलर पाथ। क्यों क्यों सर्कुलर पाथ करना चाहते हैं? सो दैट वी आर एबल टू डू द मैपिंग इन अ प्रॉपर वे, राइट। वहां पे मैपिंग जो है प्रॉपर वे से किया जा सकता है, वी आर एबल टू डू द ऑल द मैपिंग देयर, राइट। ऑलराइट, सो ये चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि जब भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, व्हेनेवर यू रीड करंट अफेयर्स, ऑल दिस थिंग्स विल बी कमिंग देयर, राइट। सो यू विल बी ऑलवेज बी फाइंडिंग आउट देयर, राइट। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पर है, निशांत कुमार ने पूछा है, you have orbital here in the diagram. Orbital, no, it's not orbital here. See what I've used here. I've used the word orbits. And I'll just take you to here. Orbital का मतलब है orbital velocity. ये language का है ना, orbital velocity, but orbit है। तो निशांत, orbital velocity ये मैं adjective word use कर रहा हूँ। He is asking a question. ऑर्बिटल क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, सेम है। ऑर्बिट बोलते हैं जहां पर वो घूम रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। आई एम राइटिंग ऑर्बिट हियर। टाइप ऑफ ऑर्बिट लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट्स, ये सारी चीजें। बट व्हेन आई से वेलोसिटी, स्पीड, ऑर्बिटल, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में पढ़ना है ना, ग्रामर पढ़ते हैं ना, जैसे क्या होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो एक तरह का एडजेक्टिव वी आर यूजिंग इन दैट वे, वो तो लैंग्वेज का पार्ट है, वो सेम थिंग इज देयर, है ना। ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट, है ना, spacecraft in orbit, orbital spacecraft, that way we indicate that part is there. So anyway, this part is there. Now what comes here, very very important, when it comes to third classification, they will come across this word geosynchronous, and I'm very sure many of you would have read all this, है ना। geosynchronous orbit और दूसरा होता है sun synchronous orbit. Anybody in the classroom who want to tell me what is the meaning there, geosynchronous, sun synchronous? geosynchronous orbit, sun synchronous orbit, क्या मतलब है इसका? क्योंकि ये वर्ड सब आएगा, अभी जितने भी हम लोग मिशंस पढ़ेंगे यहाँ पर ये सारे वर्ड्स आएंगे। कोई भी क्लास में बता, लेट मी आस्क हियर, नयन गुप्ता। Yes, sir. हाँ नयन गुप्ता, हाँ, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? Yes. Yeah, fine, sir. Sir, it means, Okay, sir, the satellite is point on the same point every time. It is for the, sir, or the हाँ observation type. It is pointed on a particular point for the हाँ observation, for the army purpose, for the intelligence purpose. करेक्ट। तो विच वन यू आर टॉकिंग, जियोसिंक्रोनस, राइट? Yes, sir. और यस, राइट, सेम पॉइंट, ओके, गुड, वेरी गुड। लाइक
नयन ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया. Nayan has given a very good example, like some type of military or some type for communication. When we want that, then we follow that one. Right. Thank you, Nayan, for your reply. I will also write there. Right. So now I'm coming to here. Nitish Raj. Sun synchronous से क्या समझते हैं? What do you mean by sun synchronous? Nitish Raj. Sun synchronous का मतलब क्या होता है? He is not able to. Sahil, can you unmute yourself? Sahil. Sahil. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon. How are you? Good Good. afternoon. Yes, sir. I'm Yeah, good. 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 Very good. What is sun synchronous orbit? Any idea? No, sir. Sorry, sir. Not idea. Okay. Okay, not at all. Not at all. No need to be sorry. I am always there to help you out. है ना, उसको सोचना नहीं है. ठीक है. अच्छा ठीक है. Let me ask any girl here. Vandana Kumari. Yes, Madam Vandana. Do you know what is the sun synchronous orbit? Sun synchronous orbit क्या है? ये पता है? Vandana, are you there? Okay. कोई बात नहीं. सफरा से मैं पूछता हूँ. सफरा, can you unmute yourself, सफरा? सफरा निगात. जी सर. ओके, गुड आफ्टरनून. गुड आप कैसी आफ्टरनून हो? सर. जी सर. गुड. ठीक. जी. अच्छा, पहले तो ये बताओ, आपका साइंस बैकग्राउंड है या नहीं है? यस सर, है मेरा साइंस बैकग्राउंड. गुड, वेरी गुड. तो एनी आइडिया, आपने कहीं पहले से पढ़ रखा है कोचिंग वगैरह? हैव यू डन एनीवेयर एल्स? नो सर. नो. ओके. ओके, सो एनी आइडिया व्हाट इज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट? नो सर. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम देयर. सो नथिंग टू वरी अबाउट. आई एम देयर टू हेल्प. आपका इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है? सर मेरा हिंदी मीडियम है. अच्छा अच्छा, ठीक है. तो इसलिए मैं बीच में हिंदी भी मैं यूज करूंगा. मैं भी जी. लिख रहा हूँ इंग्लिश में. मैं जहां भी होगा मैं हिंदी शब्द भी प्रयोग कर दूंगा मैं. तो वहां पे आपके लिए आसान हो जाएगा. ठीक है. जी, थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. कोई बताना चाहता है? कोई भी? एनीबॉडी वांट टू से? कोई भी क्लास में जो बताना चाहे? यू कैन रेज योर हैंड आल्सो देयर. आई कैन सी द रेज हैंड. ओके, सोनिया दत्ता. सोनिया, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? सोनिया. Hello, sir. हेलो सोनिया, हाउ आर यू? गुड. Yes, I'm good. आई Sir, एम as far as I remember, sun हाँ. synchronous satellite is a kind of satellite which will have the view of the sun and the illuminated side of the earth. ओके, This वेरी much गुड. I can remember. No, very good, very good. That's really good there. You have certain bit of idea. Your background is very good. I really like this background. This green. Thank you, sir. I like this background there. Right. You're from where? Kolkata? I'm from Kolkata, West Bengal. Which place in Kolkata? কোথায় বাড়ি আছে? It's আমার বাড়ি কেষ্টপুরে, sir. It's near airport. अच्छा अच्छा, I know that. वो मेरा उधर जाना होता है सॉल्ट लेक में. Okay. अच्छा. सॉल्ट मेरा जाना होता है तो वहां पर कई बार वो कृष्णपुर में ब्रिज क्रॉस करके भी जाता हूँ. तो वो अच्छा. पास में ही है सारा जो है ना. दैट्स गुड. दैट्स गुड. ओके, दैट्स रियली. So I'll come to the part of it. Let me just get back to here. See, it's a very simple concept. You have to understand the concept is that, see, when a satellite or a spacecraft with respect to Earth's rotation, that is here, the spacecraft motion, जो भी इसका motion है in orbit, when it is going to orbit, is basically based on rotational aspect of the Earth. आप सबको पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है ना. अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, राइट. सो रोटेशनल एस्पेक्ट ऑफ अर्थ, दैट मींस इफ आई टेक द अर्थ हियर, अगर हम पृथ्वी को लें तो पृथ्वी का जो एक्सिस है, एक्सिस 23.5, तो इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, राइट. नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ वी हैव अ सैटेलाइट हियर. लेट्स से I change the color here. We have a satellite here which is going around. This orbit. The satellite is moving into the orbit here. ठीक है? That is with respect to Earth's rotation. यानी कि पृथ्वी अपने रोटेशन पे
अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और सैटेलाइट अपने ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे अर्थ का रोटेशन होता जाता है तो वैसे ही सैटेलाइट का रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ हो रहा है. Now it's not necessary कि 0 डिग्री हो, it can be tilted also. The plane of the orbit can be tilt also there. तो यहाँ पर ये चीज है कि यहाँ synchronization है. Here the synchronization is with the rotation of the earth. रोटेशन के बेसिस पे किया जा रहा है. On the other hand, when you talk about sun synchronous orbit, here spacecraft का जो मोशन है, मूवमेंट है, मोशन इन इट्स ऑर्बिट, अपने जो ऑर्बिट में है वो अर्थ के रोटेशन पे नहीं है, इज बेस्ड ऑन रिवोल्यूशन एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ. रिवोल्यूशन एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ जो है रोटेट करने के साथ साथ रिवॉल्व भी करता है, सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है 365 एंड 1/4 डे. जैसे ये साल हमारा लीप ईयर का जो है 1 डे इज एडेड, इस बार फरवरी में 29 का मंथ है, तो 365 1/4 हम लेते हैं. तो यहाँ पर जो है स्पेस क्राफ्ट का जो है देयर मोशन इज देयर. तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ यहाँ पर है, अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ रोटेट्स also there, and earth is also revolving around the sun. That means the sun is here. So what is happening here? The earth goes around the sun, right? So it is basically in context of this part. When the earth, right, revolve around the sun, when earth revolve around the sun, so the satellite will move in the orbit in such a manner that it will always be looking from sun's direction. It will always be based on the, जो अभी she has given the idea here. It will be illuminated part of sun, जो sun का light आ रहा है ना, this is going to this one is also called sometime SSPO. Sun synchronous polar orbit कहते हैं इसको, polar orbit. That means the satellite is going in a polar orbit around the earth and follows the earth revolution. As the earth revolve, let's say if earth revolve, that this ring, what is this ring, ये जो आप ring देख रहे हो, this ring, that ring basically in its axis move on, वो rotate होता है, that keep on going around. Like for example, when the earth, suppose when the earth comes here, suppose earth comes here, earth is here, right? When the earth comes here, so what will happen again? This satellite will be again going around the orbit like that it will be again looking into the sun's direction, right? Suppose earth comes here, earth is here, so what will happen? Now the satellite orbit, it will go along this one. So every time what is happening here, the orbit of this satellite pointed towards the sunlight area, what is it, no? Where the sun's light, illumination of the sun, it follows that one. That means, sir, if you see here, it is in this direction. When it's here, it is in this direction. When it's here, it is in this particular direction. It's a polar orbit only. It's basically polar. But is able to see from there. जबकि यहाँ पर क्या है, इस जगह पे देखा जाए तो ये अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, इसको सन से कोई मतलब नहीं है. It has nothing to do with the sun, right? But here it depends on sun. It depends on sun's direction. तो इसको sun synchronous कहते हैं.
Whereas here it depends, यहाँ जो depends on Earth's rotation there. तो उसको सन से कोई मतलब नहीं, अर्थ के रोटेशन से मतलब है. That is geosynchronous. But when the satellite goes in orbit in such a manner, it always harmonizes with the sun's. That is called sun synchronous orbit. And they are basically polar orbit. Right? They are basically polar orbit. Now, geosynchronous orbit का बहुत अच्छा एग्जांपल आता है जो स्टेशनरी ऑर्बिट. जो सिंक्रोनस का बहुत अच्छा एग्जांपल आता है जो स्टेशनरी ऑर्बिट. सन सिंक्रोनस का अच्छा एग्जांपल आता है जो कि पोलर बेस्ड ऑर्बिट होता है. इट कम्स इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया देयर, वहां पर आता है उसमें, है ना. तो ये चीज को ध्यान में रखना है. तो अगर एग्जाम पेपर में वो वर्ड होते हैं, है ना, वो वर्ड दिया रहेगा वेयर यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, तो क्या उसमें दिया हुआ है. तो जनरली हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का उपयोग कहाँ करते हैं? जब हमें रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन करना हो, भू सर्वेक्षण करना हो, कुछ मैपिंग करना हो, तो क्या होता है, सन का जहां जहां लाइट जाता है तो वो सैटेलाइट भी वही फॉलो करता है, वो सन सिंक्रोनस होता है. और जो सिंक्रोनस का हम कहाँ ज्यादा यूज करते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, है ना, नेविगेशन सैटेलाइट में होता है, वहां यूज होता है. तो अगर हम इसका एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो सिंक्रोनस का है, अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एक होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, ये जो होता है कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं. इवन हम नेविगेशन में यूज करते हैं मोस्टली जो है ना, जहां पर हम कहाँ पर यूज करते हैं ये चीज में, जहां पर जो सिंक्रोनस है. और इसका कहाँ यूज होता है? इस तरह के जो ऑर्बिट होते हैं, ज्यादातर जो ये ऑर्बिट होते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए होते हैं. सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का हम यूज जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं. वी डू इट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, उसके लिए किया जाता है. ठीक है, अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए वहां पर हम यूज करते हैं कि चाहे ताकि हमें अर्थ का जो भी हमें मैपिंग करना है, सारी चीज करना है, तो हम वहां पर उसको फॉलो करते हैं. दैट कम्स इनटू दैट, उसको स्टडी किया जाता है. उससे समझ में आता है कि कहाँ पर कौन सा जगह है जो लैंड है, वाटर है. और ऐसे सैटेलाइट के पास क्या होता है, दे हैव अ कैमरा एंड इंस्ट्रूमेंट, वो सारा का सारा मैपिंग करते हैं, वो इमेजिंग करते हैं. तो वो सन सिंक्रोनस होते हैं, सन सिंक्रोनस. मैं एग्जांपल दूंगा, मैं आई गिव यू एग्जांपल फ्रॉम इसरो, ISRO का जो है. बट ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, और जो जनरली कम्युनिकेशन नेविगेशन ये सारे होते हैं, वो सब में हम क्या प्रेफर करते हैं? जियो सिंक्रोनस. जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को हम प्रेफर करते हैं, वहां पर जो है उस कॉन्टेक्स्ट में आता है वहां पर. राइट. तो ये एक बेसिक चीज है, कॉन्सेप्ट, वो ध्यान रखना है. यू टू जस्ट कीप एट द बैक ऑफ द माइंड. क्योंकि क्या है, मुझे अभी मैं पूरा का पूरा जितने मिशन से मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा बहुत मुझे टर्म को बताना जरूरी है. आई विल टेल यू द बेसिक मीनिंग ऑफ द टर्म्स, देन ओनली यू विल बी गेटिंग टू नो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन एंड ऑल द थिंग्स विल कम इनटू दैट. फिर एक एक करके सारी चीजें हम लोग क्लास में कवर करेंगे, विल बी कवरिंग इनटू दैट वन. राइट. तो ये चीज यहाँ पर आता है. ये समझ में आ रहा है सबको सन सिंक्रोनस का? जो सिंक्रोनस आपको समझ में आ गया कि अर्थ के रोटेशन के बेसिस पे. सन सिंक्रोनस क्या है? सैटेलाइट इज गोइंग अराउंड द अर्थ इन पोलर ऑर्बिट, और वो सन को फॉलो कर रहा है. जैसे अर्थ का रिवॉल्व हो रहा है, इज लुकिंग इनटू द सन पार्ट ऑफ इट, वहां पर देख रहे हो. राइट. तो वो चीज वहां पर है. राइट. एनी डाउट यू हैव? एनी डाउट, एनीथिंग? ओके, लेट मी आस्क एनी. आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स आल्सो देयर. अगर किसी का डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं. प्रगति ने कहा है क्लियर है. सुयस का नहीं हुआ है, तो सुयस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. सुयस, सुयस सिंह, सुयस, यस, सुयस. एक शुक्ला भी है, एक सिंह भी है. आई डोंट नो कौन सा सुयस वहां पर है. तो आप अनम्यूट कर सकते हो, फिर आस्क मी द डाउट. सुयस. अच्छा, वन क्वेश्चन, वंदना इज वर्किंग GPS, दिस विल बी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट. ऐसा जरूरी नहीं है, वहां सर्कुलर भी होता है, ऐसा नहीं है.
लेकिन वो क्या है कि जनरली हम रखते हैं ताकि कभी कभार सर्कुलर भी होते हैं, बट जैसे हम इलेक्ट्रिकल की ये बात करते हैं कि वहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस हम मेंटेन रखते हैं, लो नियर एंड द फार अवे देयर, बट सर्कुलर भी होता है। ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्बिट इलेक्ट्रिकल ही होंगे। All orbits are electrical. That is not the always the part. They maintain their some kind of thing there. But what is she is asking the question? Suyash, what you have not understood? The doubt is clear there. All right, all right, not a problem there. I am just coming here. Let's know now. Lagrange point I'll cover there. Don't worry. Lagrange point पे भी हम लोग discuss करेंगे यहाँ पर. The C is this one. Now let's understand here D. The D, if you look at, you come across this name geostationary orbit, which we primarily use for our communication satellite के लिए, geostationary orbit है ना. इसको हिंदी में कहते हैं भू स्थिर कक्षा बोला जाता है, हिंदी में ये कहा जाता है geostationary orbit जो है, राइट. तो geostationary orbit की हम बात करें तो what is the first thing here? First thing is that is a circular orbit. ये सर्कुलर ऑर्बिट होता है. दूसरी बात क्या होता है, ये इक्वेटोरियल प्लेन में होता है, नॉट द पोलर. तीसरा बात ये होता है कि ये जो ऑर्बिट है इसका जो रेडियस है, डिस्टेंस, ये बहुत फार अवे होता है. दैट इज कॉल्ड हियर 35,786 किलोमीटर्स और अप्रोक्सीमेट 36,000 किलोमीटर्स होते हैं, जिसको कहा जाता है हाई अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं. इसे कहा जाता है हाई अर्थ ऑर्बिट. इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वहां रखा जाता है. और इसको स्टेशनरी क्यों कहते हैं? स्टेशनरी इसलिए कहा जाता है कि हियर सैटेलाइट मूव हियर, जो सैटेलाइट जो मूव करता है, मूविंग इन दिस ऑर्बिट है. यहाँ तीन चीजें सेटिस्फाई करना होता है, यहाँ पर तीन चीजें सेटिस्फाई होता है. पहला चीज होता है कि फर्स्ट थिंग यहाँ पर होता है टाइम, 24 आवर्स. यानी कि जो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में है वो एक रोटेशन अर्थ का और एक या वन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ 24 आवर्स में कवर करता है, जितना टाइम में अर्थ रोटेट्स. दूसरा होता है डायरेक्शन. नाउ व्हेन इट्स अ डायरेक्शन, एज यू ऑल नो, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो दूसरा जो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, सैटेलाइट मस्ट गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और थर्ड जो है यहाँ पे जो है पोजिशन. What is position here? Fixed to a particular location on earth. अर्थ के किसी पर्टिकुलर लोकेशन से वो फिक्स होता है. ये क्यों पॉसिबल है? कहने का मतलब है कि यहां पर इसलिए पॉसिबल है कि रिलेटिव स्पीड, अर्थ का रोटेशन का स्पीड और सैटेलाइट का रिवोल्यूशन स्पीड दोनों मैच करते हैं, बोथ मैच ईच अदर, है ना. यहां पर ऐसा होता है कि जो सैटेलाइट का जो जितना मूव करने का जो स्पीड है और वहां पर तो वो हमेशा मैच करता है. लाइक इफ द अर्थ इज लाइक दिस, ये अर्थ है, ठीक है, और सैटेलाइट यहां पर है, तो एवरी टाइम वो डिस्टेंस सैटेलाइट का हमेशा वो फिक्स रखता है. अगर यहाँ पर वो मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर गया, ये पोजीशन को जब मूव होता है, तो अगर मूव हो गया यहाँ पर, तो अगेन द डिस्टेंस ये हमेशा जो है सेम रखता है. इट ऑलवेज रिमेन फिक्स टू अ पर्टिकुलर लोकेशन. क्या इसका मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हियर रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ nearly match with orbital speed of satellite. उसको मैच किया जाता है.
अब इमेजिन करो कि ये दो ट्रेन है, ये दो चीजें हैं जो मैं भी, एक मेरे हाथ में मोबाइल फोन है ये, और ये पेन है। जब दोनों की स्पीड सेम होगी तो हमेशा एक जैसा दिखेगा। ये बोथ आर मूविंग सेम, तो बोथ विल बी देयर। अब दोनों की स्पीड, अगर ये फास्ट चला जाएगा तो ये दूर चला जाएगा, या ये फास्ट मूव कर गया, दिस पेन विच आई एम शोइंग दैट इट गोज फास्ट, तो ये पीछे हो जाएगा। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ हैव टू मेंटेन द सेम स्पीड, तभी एक जगह पे रहेगा। तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशन। अर्थ इज रोटेटिंग, दिस मोबाइल फोन विच आई एम रोटेटिंग, एंड द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। तो at any point of time, the way rotational speed should cover with the revolution speed of the satellite, ताकि वो हमेशा एक जगह से फिक्स रहे स्काई में। और काम यूज करते हैं ऐसे सैटेलाइट को, कम्युनिकेशन पर्पस। इसका जो यूज होता है, दैट इज व्हाट, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि वी हैव टू सेंड द सिग्नल एंड रिसीव द सिग्नल। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है, द सैटेलाइट को जो है, ये जो अर्थ है, अर्थ से हमेशा इसलिए फिक्स रखना पड़ता है बिकॉज दिस सैटेलाइट हैज टू ऑलवेज फिक्स फ्रॉम द पोजिशन सो दैट द सिग्नल कैन गो एंड कम बैक, रिलेइंग, कम्युनिकेट करने के लिए। इसके लिए इसको फिक्स, बट याद रखना है कि ये फिक्स करने का मतलब ये नहीं कि वहां स्टेशनरी है, नो, एज अ मिसनोमर वर्ड। सैटेलाइट इज ऑल्सो मूविंग अराउंड, सैटेलाइट इज ऑल्सो गोइंग अराउंड द अर्थ। Satellite is not fixed. You are fixing with the position on the earth. Satellite is also going around. Earth is also rotating. ठीक है, वो चीज है। And what is this orbit? Is basically a geosynchronous orbit. If you look at this orbit, is basically a geosynchronous. Is basically a geosynchronous orbit. Circular but geosynchronous. The geosynchronous orbit only. You can say it is an example of geosynchronous orbit. What is geosynchronous orbit? Where satellite goes with respect to rotation of the earth. है ना, रोटेशन ऑफ द अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में मूव करता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा कि सैटेलाइट का जो मूवमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो अर्थ के रोटेशन स्पीड को हमेशा फॉलो करते हुए रहे, ताकि एक जगह से हमेशा आसमान में एक ही जगह दिखे। तो ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का ही एक एग्जाम्पल है जहां ये चीज किया जाता है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे इंडिया का इनसेट जिसे सैटेलाइट जो है इसी पे भेज रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिस्टेंस जो है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर ऑर्बिट विच इज वेरी वेरी फार अवे, 36,000 अराउंड किलोमीटर जो है डिस्टेंस, बहुत दूर डिस्टेंस है, डिस्टेंस आता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना, यू हैव टू ऑलवेज कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि ये हमेशा एक पिक्चर आपके दिमाग में बना होना चाहिए। जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट आता है ये सारा इसी कॉन्टेक्स्ट पे आता है। ये जो सिंक्रोनस का ही ऑर्बिट का एग्जांपल है। आर यू ऑल एबल टू राइट? आप सब लोग लिख पा रहे हो, या कहीं मुझे स्लो डाउन करना है तो मुझे बताइए, आई कैन स्लो डाउन देयर। Yes, Sonia, you are very right. Relative position is stationary at any point of time. Yes, relative velocity is same. Bapi Mishra, good, very good. Good. So I'm looking at your chat box. मैं आपका chat box देख रहा हूं मैं. Good, good, very good. Right, सही है, मैं आपका chat box I'm seeing there and I'm able to see it. Now what I'm coming here. Let's go to the last here, E here. The E जो part है, that is the based on altitude. will come across Leo, Mio and HEO. अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज लियो? लियो बेसिकली स्टैंड्स फॉर लो अर्थ ऑर्बिट। इसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, राइट? लो अर्थ ऑर्बिट। व्हाट इज लो अर्थ ऑर्बिट? अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस टू 2000 किलोमीटर्स।
हाइट एंड ऑल्टीट्यूड जो है, that means any orbit, any kind of orbit which is located, let's say the satellite is located here and this orbit is here, let's say 600 kilometers, that is a low earth orbit, is a low earth orbit. इसी में एक वर्ड आता है, कई बार आप पढ़ते हैं ये वर्ड, नियर अर्थ ऑर्बिट। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे नियर अर्थ एस्टेरॉइड, इसी में एक वर्ड आता है नियर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, नियो। What is near Earth orbit? That is somewhere around 400 to 600 kilometers. That is what called as the near Earth orbit. Is near to the orbit, near to the Earth. Near Earth orbit is a part of low Earth orbit. Near Earth orbit is a part of low Earth orbit. जब नियर बोलते हैं हम पृथ्वी के सतह के करीब बोलते हैं, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर पृथ्वी की सतह के नजदीक होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं उससे ऊपर तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही है। मतलब कहने मतलब नियर अर्थ ऑर्बिट इज अ सबसेट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट, वेयर अप टू लो अर्थ ऑर्बिट गोज अप टू 2000 किलोमीटर्स, मैक्सिमम इसका ऑल्टीट्यूड 2000 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, ये टर्म्स को आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस टर्म्स हियर। So when we talk about 400, 500, it's called near Earth orbit, nearer to the ground, nearer to the surface, and is a part of low Earth orbit. Low Earth orbit का पार्ट में आता है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कहाँ हम यूज करते हैं इसका, कहाँ का यूटिलिटी कहाँ आता है, कैसे सैटेलाइट्स होंगे, स्पेस क्राफ्ट होंगे जो इसका एप्लीकेशन में आता है। तो पहला यहाँ एप्लीकेशन आता है जो अर्थ के करीब होने पे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन, जो मैंने बोला रिमोट सेंसिंग, कि हम रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, अर्थ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। मैपिंग कैन बी डन, डाटा कैन बी कलेक्टेड, दिस ऑल लाइक हियर मैपिंग, मैपिंग ऑफ रिसोर्सेस। पृथ्वी पे जो संसाधन है, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, कोई भी हमें स्टडी करना है, फिर यहाँ इमेजिंग वगैरह होता है, इमेजिंग ऑफ सरफेस, कोई भी हमें इमेजिंग करना है तो वहां पर चीज है, कलेक्ट कोई डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, any kind of data we want to collect, so we can do that one. So that's where the low earth orbit becomes very very useful. यहाँ पे जो है low earth orbit का एप्लीकेशन आता है। जो भी जैसे भी हम कोई भी रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है, वो हमेशा हम लोग रखते हैं लो अर्थ ऑर्बिट का कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर रखते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये लो अर्थ ऑर्बिट में हम रखते हैं, राइट। तो वह हमेशा लो अर्थ ऑर्बिट में आता है। नाउ उसमें आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, बट बिफोर दैट आई विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच कम्स हियर, सेकंड जो इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, नंबर 2 जो है वो है मेट्रोलॉजी, weather study, right? Study of weather, study of clouds, right? Then again weather, rainfall, we also study rainfall, all those kind of data we can study. ये सारा जो है हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, we can do it from low earth orbit, meteorological science, ये सारा काम आता है लो अर्थ ऑर्बिट का, मेट्रोलॉजिकल स्टडी में होता है, राइट। इसके अलावा जो है व्हाट इज अनदर थिंग हियर, थर्ड थिंग व्हिच आई एम राइटिंग हियर, स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन लाइक हियर एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी, astronomical study. Like for example, I'll give you 2 examples here. One is the telescope. NASA has been making such kind of telescopes, and just like a satellite, if you like, for example, I'll give a very good example, Hubble Space Telescope.
1990, NASA built a very important telescope called Hubble telescope, and that was put in around 400 kilometers. अब उसको रिटायर कर दिया गया है. Now NASA is using James Webb JWST, but James Webb is a Lagrange point. L2 point में आता है. Lagrangian point 2, back of the Earth. वहां पर JWST को रखा गया है, James Webb Space Telescope. But initially Hubble, what do you say, Hubble telescope, that uses the low Earth orbit, 400 kilometers. अब मैं एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं, you will be aware of it. इंडिया का एस्ट्रोसैट, India's first, if you look at India's first जो पहला astronomical satellite है, India's first astronomical satellite. Now I'll ask a question to the students here. अभी हाल ही में जनवरी में इसरो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट को लॉन्च किया फॉर स्टडी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल. कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट? सी एस्ट्रोसैट was launched in 2015. ये पुराना हो गया है. 2015-16 वहां पर लॉन्च किया गया था. अभी जनवरी 2024, वेरी फर्स्ट जनवरी, पहला जनवरी, द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, ISRO has launched another satellite for astronomy, for study of galaxies, stars, black hole, neutron stars. Can anyone tell me what is the name of that satellite, that spacecraft which ISRO has successfully launched? बहुत important है, it's very very important. ये बहुत important है. यही चीज है ना, आपको कनेक्ट करना है, सारी चीजों को कनेक्ट करते जाना है. कौन बताएगा? Who will tell me which is the satellite? Let me see the chat box also. Let me see the chat box. I'm looking good, very good. ExpoSat, very good. Bhanu has also replied. Rohan also replied. ExpoSat, very good. X-ray polarimeter satellite, good, very good. Another one we have X-ray Expo satellite, very good there. X-ray polarimeter. Polarimeter satellite. You're very right. X-ray polarimeter satellite, ExpoSat. सब लोगों ने जवाब दिया है. बापी का है, रश्मिता का है, सोनिया है, सब लोगों ने जवाब दिया है. ये इंडिया का अनदर एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है जो हमने लॉन्च किया है. कहाँ है ये सब? लो अर्थ ऑर्बिट, नॉट ए हाई अर्थ ऑर्बिट, दे आर इन द लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है. और से पूरा स्टडी जो डाटा है, दैट इज ऑल सेंट बैक टू द अर्थ. यू आर वेरी राइट हियर. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट द पीपल आर रिप्लाइंग टू माय आंसर देयर. दैट्स गुड. तो आप जैसे एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी जो करते हैं, उसके लिए हमेशा हम ऐसे टेलीस्कोप को यूज करते हैं, सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं. ठीक है. अब यहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन जो है, स्पेस स्टेशन. अगेन यू विल फाइंड लो अर्थ ऑर्बिट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. लो अर्थ ऑर्बिट बिकम्स वेरी सुटेबल फॉर स्पेस स्टेशन. ठीक है. अब जैसे यहां पर एग्जांपल है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS. You all know that 5 agencies, right, managing this one. अब रशिया से बाहर जा रहा है, right? Russia is now trying to go outside this one. China इसमें नहीं है. C is the Canada. CAS is China. CAS is China. But CSA, Canadian Space Agency. ESA, European Space Agency. JAXA, Japan. Roscosmos, Russia. But you know, Ukraine war, Russia-Ukraine war, Russia is pulling out of that part of it. The main thing is that ये जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, सबसे पहला स्पेस स्टेशन बिल्ड करने वाला कंट्री है रशिया. USSR is the first country in the world
which built a space station called Mir, MIR Mir. उसी मीर पे बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. Now the things are moving because Russia and US relation, that part, and particularly after Ukraine war, ये जो war चल रहा है, तो वहां पर रशिया का भी यहाँ पर है. Now Russia also want to build an independent space station. Now what comes here? China, our neighbor, that is the CAS, China, Chinese aeronautical science, that is building, you know that, Tiangong. Tiangong is a space station. That is a China's space station down under construction. ये भी कई बार न्यूज में आता है. Tiangong is also comes in the news. ये भी न्यूज में आता रहता है. Tiangong का भी न्यूज में आता है. अब यहाँ पर आता है another one which you all know, ISRO. Going to start. अभी recently न्यूज में था, we have already made a plan. It's called भारतीय अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है ना, जो स्टेशन है, that what India is now planning to build. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो कहां कब से स्टार्ट होगा? From 2028. From 2028, India is planning to start building independent space station. वो हम लोग इंडिपेंडेंट बनाने वाले हैं. अभी रिसेंटली जो था, I'll just show you there. Recently it was there in the news. Right? Recently it was in the news. Let me just it was in the news. Let me open that. I'll use the Chrome here. You'll get to see there. This announcement was there. Indian Space Station, if you just search here. And Prime Minister has already approved. भारतीय अंतरिक्ष, उसके already ये approval दे दिया गया. 25 टन्स का ये स्पेस स्टेशन हम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं. राइट? 25 ton. 1 ton is 1000 kilogram. This is what we have going to have the part of it. And now this was in the news. Can you see here? ISRO plans to launch India's first international space station by 2028. You know that our chairman, you know his name, Dr. K. Somnath. There was a press meet and he said that India is going to start our construction space station by 2028. Now why? Because first we are going to carry out Gaganyaan mission. You all know Gaganyaan mission. Our Gaganyaan mission will be done by 2025. So once we are successful in Gaganyaan mission, our next will be this Antariksh station. We are going to build that. And that is where, see here, it's all covered here. DNA India. India aims for space station and by 2035 will complete. By 2035, will start from 2028, and in 7 years, 7 years, India will complete the space station. India is going to complete the space station. Right?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, यू कुड गेट क्वेश्चन देयर दिस पार्ट। कहां पे बिल्ड करेंगे? लो अर्थ ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है? लो अर्थ ऑर्बिट। वी आर गोइंग टू बिल्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट, not high earth orbit, low earth orbit, right? Now let's look at a question here. Let's say I'm writing a question here. Let me see how many of you can give me the answer here. Question here. If I'm asking a question, sometimes you have a direct question in the exam. वो सीधा तरह से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, कहां पर, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन के क्या अनुप्रयोग है? नंबर 1, अर्थ ऑब्जर्वेशन। नंबर 2, स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष अन्वेषण। नंबर 3, स्पेस voyage or travel. Number 4, all this what I'm writing here. Space experimentation. And let's say you get the option here. Any one, any two, any three, all four. क्या होगा आंसर? Suppose you get a question like this, है ना, कि अंतरिक्ष स्टेशन का क्या क्या उपयोग है, क्या क्या वहां पर एप्लीकेशन पार्ट आएगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन, पृथ्वी अवलोकन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष अन्वेषण, स्पेस वॉयाज, अंतरिक्ष मतलब जो ट्रेवल वगैरह होता है, वॉयाज, स्पेस एक्सपेरिमेंटेशन, एनी काइंड ऑफ टेस्टिंग. तो व्हाट विल बी आंसर हियर? आउट ऑफ ABCD, which one you take? Any of the above, 1 or 2 or 3 or 4? I'm looking at the chat box. I'm looking at the chat box right now. Kunal is saying D, Bhanu is saying D, Rohan is saying all 4. Okay. Manish Thakur is saying D, Rohit Singh is saying D, right? All right. Nitish is saying D. Safra C कह रही है. Yes, we'll come to Vandana. What type of experiments are carried out, we'll be seeing that. Mohammad Hussain is saying D. ठीक है, बहुत लोग का आंसर डी है, तो गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आंसर डी है. द करेक्ट आंसर दिस वन. द आंसर टू दिस क्वेश्चन is D, all 4. We can observe from the earth, that's true. We can also carry out space exploration, that is also correct. Space voyage, manned mission, we can do it, like crew member. When in International Space Station, crew member goes there. Now here experiment, that is a microgravity experiment, zero gravity. Basically, it is a lab where we can carry out the experiments in zero gravity, where here gravity is very small. बहुत सारा चीज जिसको हमें जीरो ग्रेविटी या कम ग्रेविटी में टेस्टिंग करना है, वहां हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और ऐसा किया जाता है, ये कई बार किया जाता है एक्सपेरिमेंट वगैरह. Many times when the astronauts go to the International Space Station, along with that they carry the instruments, they carry the things, and they conduct the experiment in zero gravity. In order to carry out such experiment on the earth, we need to create such facility. अगर हमें पृथ्वी में जीरो ग्रेविटी या कम ग्रेविटी, माइक्रो ग्रेविटी कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमें वैसी फैसिलिटी बनानी पड़ेगी. वहां तो नेचुरली है, नेचुरली देयर इज अ जीरो ग्रेविटी. All this could be there.
अब ये भी कहा जा रहा है टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म, इसमें एक कंपनी आपको पता है, अभी रिसेंटली स्पेस टूरिज्म की हम बात करें, स्पेस टूरिज्म में रिसेंटली देयर इज अ, आई विल गिव यू द आइडिया हियर, you know that Virgin Galactic, there's a company by Richard Anderson, they've created a spacecraft to go to the outer space and come back. Next will be space tourism. If you look at here, it can be a space tourism here. ये चीज यहां पर है. Virgin Galactic has already done this kind of work here, right? They already done this one. They built the spacecraft which will go to the outer space and come back. Many things are moving very, very fast in the space science and technology. That's one key part of it. ये already बन चुका है. It's already been done. It's already, you'll find this what they have done here. They have already come here, and they have just basically going to, you know, all these people. What you see here, they've already gone and came back. Virgin Atlantic. I dreamt of this what of moment for so long, and now it's here. It feels kind of like a dream at this point. I am actually trying to be totally open-minded and see what comes visually, mentally, physically. Can you all hear it? Say to everyone, if you have the possibility to do this, do it. Is it audible? It's so special. We actually have a great crew. We've come together incredibly nicely, and I'm looking forward to all of it. Three, two, one, release, release, release. I can say spaceport. So unbelievable. This is absolutely insane. Oh my God. I had no idea, no matter how many pictures, photos, movies, there's no comparison to the actual colors that you're seeing of the atmosphere and the earth, and it's so clear. Right, what you have seen here, already things have moved. Already things have moved very, very fast in this particular one, and ये बहुत जल्दी होने वाला है कि अंतरिक्ष स्टेशन जो है will become the place for tourist, space tourist, कि वो जाएंगे और वहां से वापस आएंगे. They all will be going there and they will be coming back on the earth. है ना, ये चीज होने वाला है. So tourism is another thing. Elon Musk, you know Elon Musk, SpaceX, Elon Musk. Elon Musk is spending a lot amount of money. Elon Musk has built up a rocket called Falcon 9 Heavy. Falcon 9 Heavy goes up and come back, vertically up, vertically down. SpaceX has done that. All these are going to be a big thing in the coming time. Today we feel space station something a distant dream, but after 20-30 years, it is going to become a reality. It is going to be a reality part of it. Again, what is very important, this all stations where we are building in the low Earth orbit. This is all part of low Earth orbit, LEO. There we are building all this part of it, right? Even mains exam, there was a question asked in the mains exam, India's plan to build space station. So what basically will get the benefit, advantages of having India's space station? इंडिया का स्पेस स्टेशन होने पे इंडिया को क्या लाभ मिलने वाला है, ये मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया. There has been asked in the mains exam question about that. So that's all things you have to be aware of it. So this is what I've given here, low Earth orbit, LEO. Now if you look at second here,
मीडियम अर्थ ऑर्बिट, MEO। मीडियम अर्थ ऑर्बिट का यहाँ पर जो सबसे बड़ा यूज होता है, दैट इज अ नेविगेशन सैटेलाइट जो होता है। एंड लास्ट ईयर यूपीएससी आस्क्ड द क्वेश्चन of Japan. Japan also has its own GPS system that was asked in the exam. So medium Earth orbit, that is coming from 2,000 kilometers height, orbit height to, you can say 36,000 kilometers, where the geostationary orbit comes there. Up to that height, right? There will be medium Earth orbit. And यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है, नेविगेशन। Navigation satellites are placed. Like if you look at, they are basically, if you take about navigation satellite, all these are in the range of 11,000 kilometers, right? That range, they're all built there. And there is not one satellite. They're basically constellation of satellite. Multiple satellites are going around the Earth. Many satellites are there. All these satellites are moving around the Earth into different plane, different orbit. They're all going around the Earth in a different orbit there. Basically, they use constellation, group of satellites here. Group of satellites are there, which cover the Earth, cover the Earth. Is cover the Earth. उसमें कुछ communication satellite भी होते हैं, which cover the Earth. Medium Earth orbit का होता है. They cover the Earth completely there. So any kind of a movement, what is navigation? See, when we say navigation, when we are using the navigation, what is very important thing which you need to remember? ये चीज जो आपको ध्यान में रखना है, जब navigation की बात करते हैं, one is the direction, दिशा. दूसरा होता है, what is very very important, altitude, depth, latitude, longitude, all the coordinates. Right here, what is called position. Position of an object. Whether that object is stationary or moving. वो चीज या तो रुका हुआ है या तो चल रहा है, गतिमान है. Road, air, sea surface, under the ocean, like submarines. Submarines move under the ocean, or on the surface ships. All those things which are there and which basically, right, we use for direction purpose, position purpose, depth, height, any kind of information, coordinates. We use this kind of navigation satellites. You know that tracking, here, tracking an object. We can track, trace, track perfectly. One more thing is very important, timing. Timing is another point of it. Location and timing. Timing, position, location, positioning, right? And then again, all this part, the information is found there. इसमें जो जब भी हम नेविगेशन की बात करते हैं, तो दो चीज को समझ में रखना है, टू थिंग्स को याद रखना है. एक होता है जहां हमें कुछ रेंज में चाहिए, we need in a range, and second is we require perfect location, precise location, like military requires precise location. So when we talk about this all navigation part, we must think of two things here. Now when we say positioning here, when we come across positioning part of it, so the two things are there. One is called standard positioning system, SPS. Right, standard positioning system, SPS.
और दूसरा होता है प्रिसीजन, प्रिसीजन पोजिशनिंग सिस्टम, पीपीएस। क्या डिफरेंस है? हियर डिफरेंस इज दैट it gives provide information of an object, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, अ मैन, एनी ऑब्जेक्ट in a range. It has got certain range, 10 meter, 20 meters, 50 meter. It gives a range. But when it comes to precision position system, it gives the exact location. Here, it provide information. यहाँ जो information मिलता है of an object, right, in a precise or exact manner. इसमें satellite, what happens in this case, satellite keep on monitoring. Satellite keep on monitoring changes in position. जैसे जैसे पोजीशन चेंज होता है, यहां पर सैटेलाइट उसको ट्रेस करता रहता है. Provide information of an object in a precise or exact manner. And it basically, the satellite keep an eye, and any movement, the change in coordinate, change in direction, change in location, it all exactly gets into the system. Here we get a range, we don't get exact. Is a not exact. They do not get exact, not exact information, location. Precision is not there. So normally if you look at, we use for civilian application here. This type of thing we do it for civilian applications. But here when you say exact location, तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है. एग्जैक्ट लोकेशन की जब हम बात करते हैं पीपीएस का, तो पहला यहाँ पर होता है मिलिट्री. We have to find the target, exact target, whether stationary, it may be bunker, enemy location, or the mobile target of enemy, moving aircraft, moving fighter jet, moving missiles, और कोई जगह पे enemy का कोई जगह है, ठिकाना है, तो मिलिट्री के लिए होता है. Then again, you know, intelligence gathering जो होता है. Then also even, you know, wildlife. How wildlife? Cheetah. You know, cheetah have been used in, have been now relocation of cheetah from Africa to India. Kuno Palpur, Kuno National Park in Madhya Pradesh. So what they are using? Radio collar. What is something called radio collar? You'll find they will use radio collar. So we know exact location of the tiger. We know the exact location of cheetah. So where in the forest that particular animal is right now. The forest department can trace and pick up that animal. So that is what we call exact location of the animal. So what we do, we use radio collar, which give the exact information. क्या होता है जब हम मोबाइल यूज करते हैं, तो यहाँ पे we have electronic receiver. That receiver is getting the signal from this group of satellites which is coming to the receiver here. Same with radio, जो tagging होता है, radio collar. So whether we talk about cheetah, we talk about tiger, we talk about lion, any kind of thing there. Civilian application, you know, range, Ola, Uber, when we book the kind of thing, we see the range. Google Map, when you use Google Map, virtual navigation, you have a range of the part of it. So that is where the standard position comes. What we do in precision, we exactly trace and pinpoint even the change in the coordinate. That is called PPS, right? Precision position system comes. Now the last part which I would like to add here, if we talk about such GPS system, precision and all. So let me just add here.
You know that one is USA. USA popularly called GPS, but it is called Navstar, navigation, satellite, and ranging. Worldwide is being used. Second, you know Russia. Russia has a system called GLONASS, Global Navigation Satellite System there. Third, if you look at Galilei, named after a scientist, that is European Union. That is the European Union has developed this Galileo Galilei. Let me write here European. For Europe, Galileo. Then fourth is China. China has got BIDU, BIDOU. All these four are for our global coverage. They are GPS, Global Position System. They all are global coverage, four of them. China has also built right now. Now, when you come to India, you are aware of India IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System, what we have given the name NAVIC, Navigation with Indian Constellation. And then one country is Japan. Japan has got QZSS, Quasi-Zenith Satellite System. Right, it's called Quasi-Zenith Satellite System is a regional system there. Satellite system of Japan, whereas India's navigation is now these two are regional coverage, not the global coverage. इसमें सैटेलाइट जो है कम है, मतलब अगर देखा जाए तो जापान में 3 सैटेलाइट यूज होता है, 3 सैटेलाइट्स, और इंडिया में 7 सैटेलाइट्स हैं. We are using group of 7 satellites, NAVIC, navigation with Indian constellation or IRNS, but Japan is using the 3 satellites. So it has a regional coverage there. Like India's IRNS or NAVIC cover India and 1,500 kilometers from the borders. But when you talk American GPS, Russian GLONASS, Europe Galileo, China's BIDU, it covers the entire world, entire Earth. That's what covered there, right? तो ये सारे चीज पता होना चाहिए. कहां पर होता है? मीडियम अर्थ ऑर्बिट का बात है. इंडिया का हम लोग पढ़ेंगे. विल स्टडी अबाउट इंडियाज रीजनल नेविगेशन सिस्टम. विल बी कवरिंग ऑल दोस काइंड ऑफ एरियाज देयर दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन द क्लासरूम, राइट? तो यहाँ पर ये चीज है, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है ना. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर. जो मैंने यहाँ पे क्लास में बताया कि ये जो मैंने इंट्रोडक्शन किया कि अभी मून इज गेटिंग द पार्ट ऑफ इट. Moon is become a part of it. Apollo mission, right? A lot of development. Roscosmos, China's Chang'e mission, U2, then Bear Sheet. There's iSpace. Now Slim of Japan. Then there's Bear Sheet of Israel. All these are there. And then you know our Chandrayaan mission, LVM-3 rocket, right? July 2023. We had and we have launched our Vikram lander with rover. This is what we had. So we'll be covering all this one. Chandrayaan mission, I'll be covering that. So this is where you come across and then we have gone into what? Certain terminology I have come into. Okay, what is Karman line, right? What is Karman line? We have discussed that. What is Karman line? We have covered this Karman line. Then we have gone into orbital velocity. Then I've covered this one. Type of orbits which I am covering here. See, mission part will come back. मेरा क्या प्लान है, मैं अभी क्या प्लान कर रहा हूँ कि जो इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम है, कमिंग प्रीलिम्स एग्जाम, आई विल कवर ऑल दोज काइंड ऑफ मिशंस थे. चंद्रयान 3 भी हम लोग कवर करेंगे, आदित्य L1 मिशन कवर करेंगे, फिर हम लोग एक्सपोसैट, निसार, अनदर मिशन कॉल्ड निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. आई एम आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट गगनयान मिशन. प्लस हम लोग अमेरिकन स्पेस एजेंसी का या ESA, जैक्सा जितने भी है, विल कवर ऑल दोस काइंड ऑफ मिशन प्रोग्राम. अभी तो बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है. वी हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर. ये तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास था. तो बेसिक थिंग आई हैव गॉन इनटू दैट. विल सी द लैग्रेंज पॉइंट आल्सो. So what are Lagrange point and why Aditya mission is important, we'll be going to see that. I'm going to cover all those areas. ठीक है. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्लास जो है
आप लोगों का भी दूसरा क्लास भी होगा मेरे ख्याल से, राइट? यस, AI is not the part of PPS. Rashmita is asking, is the AI is a part of PPS? No. When I'm saying intelligence, I'm talking military intelligence, security-based intelligence. मैडम रश्मिता, AI की बात नहीं हो रही है, AI कुछ और है। ये जो इंटेलिजेंस है वो क्या चीज बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट मिलिट्री इंटेलिजेंस। AI, we are not talking about AI. AI is something different here we are talking about. Here we can use PPS, precision position system, to identify any kind of enemy or any spying purpose, jasusi, intelligence information that I am talking about. Anyway, Vandana. Yes, standard book if you want, please, क्योंकि मेरे पास मैं उतना ज्यादा नहीं बताऊंगा, बुक की जरूरत पड़ेगी. You require the book. Book is very, very important because without book, you see, I am going to cover prelims topics. I am going to cover prelims based topic. Why today I have gone into all these words? Because prelims is my target there. Those of you who are going to appear preliminary exam this year, you should be able to solve around 15 to questions, 16 questions, जो कि prelims में science and technology का आता है. Those who are going to appear next year, हम लोग मेंस का भी कवर करेंगे. विल कवर मेंस आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम, नॉट नाउ. आई विल कवर मेंस टॉपिक इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, नॉट नाउ. आई विल ओनली कवर द प्रीलिम्स टॉपिक. और जो लोग अभी इस साल नहीं दे रहे, घबराने की बात नहीं है. जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो अगले साल भी काम आएगा. इट विल आल्सो हेल्प यू इन द नेक्स्ट ईयर. राइट? अभी तो बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू कवर lot of things are there, वो हम करेंगे. We'll be doing a lot of things there. But I want to just know that how many of you are going to appear prelims exam? कितने लोग जो prelims exam appear होंगे? Yes, I'm seeing the chat box. Most of you are there. Name of the standard book, you can take my book. My latest book is there in the market. मेरी किताब है ओक ब्रिज से, right? When you go to Oak Bridge, there is already the book here that you can, आपको दिल्ली के मार्केट मिल जाएगा. In Delhi, if you go Delhi market, you'll get it, right? और आप ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. How many of you got my book? Last time मैंने सेशन में बताया था मैं अपनी किताब के बारे में. मैंने last time I told you that my book is already there in the market and a lot of things are there already there. This book. ये अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल है. एंड आप जल्दी ले लेना क्योंकि ये बुक जल्दी खत्म हो रही है. सो और दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू जस्ट से देयर. दिस वन, सी द बुक इज देयर. ये third updated edition is already there in the market, right? Third edition is there and you can see here I have given everything here: nuclear, space, defense, biotechnology, health, advanced new technology, electric vehicles, everything you'll find here in this particular book. You'll find this one book is there, this one. When you go there, it is all given here. This you already have market में, right? You'll find this book there, right? तो बुक का वही है कि बुक gives you a kind of age. ये pre and mains दोनों के लिए है. It has got mains topic also along with the prelims exam topic. Both are there. हिंदी में नहीं है. एक ये चीज हिंदी में नहीं है. हिंदी के लिए आप जो हिंदी की किताबें हैं वो आप ले लीजिए. बहुत सारी बुक है, TMH है, बहुत सारी बुक है जिसके बुक आएंगे वो हिंदी में ले लेना है. कोई दिक्कत नहीं है. मैं क्योंकि मैंने कई बार पब्लिकेशन हाउस को कहा भी हिंदी के लिए, दे आर नॉट विलिंग टू कम आउट. तो हिंदी का मार्केट थोड़ा अलग है और इंग्लिश का अलग है. तो कई बार पब्लिकेशन हाउस को देखते हैं कि कितना बुक चल पाएगा नहीं चल पाएगा. हो सकता है भविष्य में आ भी जाए, ये चीज है. बट नाउ तो अभी इंग्लिश में ही है. एनी डाउट यू वांट टू आस्क?
Shall we end the class? कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस आउट, प्लीज डोंट मिस टुमारोज क्लास। कल का क्लास में हम लोग गोइंग टू कवर ये जो मैंने बताया आर्टेमिस मिशन, ये जो मैंने लूनर मिशन बताया है, कल हम लोग क्लास में ये भी पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू ऑल्सो कवर हाई अर्थ ऑर्बिट, लैग्रांज पॉइंट, आदित्य मिशन, चंद्रयान मिशन, निसार, all will come there. So please don't miss those who are going to appear prelims exam. For you all people going to be a very very important class. और जहां पर handout की बात होगा, any handout, I'll share with the handout also, so that you get certain things to read also. You'll be getting that support. Handout also there, right? I'll be giving that one. Anything कोई अब मुझसे बात करना चाहते हो, you can talk. आपकी क्लास है अभी? You have a class, offline class? Yes? No class? ओके, किसी को डाउट पूछना है या कल हम लोग मिले? Everybody is saying thank you, thank you. So I'm also much obliged here. Nothing to ask? No? Okay, Pragati is saying we'll meet tomorrow. So anyway, shall we end? सूर्यदीप जी, क्या क्लास एंड कर सकते हैं? कोई नहीं है वहां पर? यस सर कर रहे हैं। कौन? सोनिया? Who is this person? Sir, this is Richa. Richa, yes, Richa madam. How Sir, are you? I'm in library, so I'm speaking slowly. Sorry. Okay, okay. Shall we end now? We'll meet tomorrow at 2 o'clock. Sure, sir. Sure. Okay. Thank you, sir. See you all. Tomorrow we'll meet. All right. Take care. Bye-bye. And don't miss tomorrow's class. It's going to be very, very important class for everyone. Right? असली पिक्चर तो अब चालू होगा, अभी तो ये ट्रेलर था।